What are the sources that you need to be referring as a part of preparation for this exam? First and the most important source is the NCERTs. If you people still haven't read the NCERTs and if you think that NCERTs are useless, let me tell you, you may skip all the books and just read the NCERTs for all the subjects properly, and chances are that you will do well in the exam as compared to reading all the books which are prescribed by XYZ, and that may not land you up anywhere. So please read the NCERTs. These are the NCERTs which I recommend to all the candidates preparing for this exam. So first one is the Social and the Political Life, which is the NCERT of class 8th. It is a very well written NCERT. Some very basic concepts such as secularism, democracy, whole lot of things have been written in a very lucid manner, but believe me, they have been written, even though they have been written for class 8 student, but the concept which has been explained in them is the way it is supposed to be applied in the exam. So do not in any way think or rank the NCERTs lower than any books that you have been referring for any of these subjects. Please read the NCERTs thoroughly. In fact, I would suggest that since you people have begun early, as you keep attending the classes, we will have like 2, 3, 4 classes a week or whatever. My suggestion to you would be that you please read the NCERTs and finish them off. And within next 1.5 weeks, your target should be that पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी NCERTs हैं हम उनको खत्म कर लें. और अगर एक क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए वो किताब बनी हुई है and you people are ready to give the exam, that is, which means that most of you are already graduates, it should be very easy for you to understand the NCERTs. And I can tell you one thing, that they have been written in a very interesting manner as well. Right? Most of the NCERTs have been written in a very, very interesting manner with the help of a number of personal and life examples as well. You would be able to absorb the concepts better in the class अगर आप NCERT पहले से पढ़कर आएंगे तो. So the class 8th NCERT, Democratic Politics 1, Democratic Politics 2 of class 9th and class 10th are the other sources which I recommend to the students. If you have already a background in political science or public administration or law, then in that case I would suggest that you may start from Indian Constitution at Work, NCERT class 11th, but in that case as well I would still recommend कि ये पढ़ लीजिएगा. But ये उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ में, पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिकल साइंस, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन मैनेजमेंट, कोई बैकग्राउंड नहीं है तो बिल्कुल ये आप पढ़िएगा. दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू. एंड इन केस यू हैव सम बैकग्राउंड और समथिंग, then in that case you may skip them, but I don't necessarily recommend that. Apart from that, you all need to ensure that when you turn up for the class from tomorrow onwards, you have one book with you, and which is the bare act of the Indian Constitution. ठीक है, मेरा ये बहुत पुराना हो चुका है, आप देखिए इसकी कैसी हालत हो चुकी है. इसको टेप लगा के मैं किसी भी तरीके से चला रहा हूं, है ना, ये अपने अंतिम चरणों में है. राइट, so किसी भी दिन जो है ये दम तोड़ सकता है. राइट, बट मैं इसको यूज कर रहा हूं. अब इसको आप उसको जाके बस इतना बोलिए मेरे को बेयर एक्ट चाहिए. क्या होता है, कई बार स्टूडेंट जो हैं वो मोटे मोटे बेयर एक्ट ले आते हैं कमेंट्री के साथ, वो सब मत लीजिएगा. 100-200 रुपए से ऊपर अगर बेयर एक्ट आपको वो आदमी दे रहा है तो बोलेगा भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी शॉप पे चले जाइएगा, वहां से ले लीजिएगा. अदरवाइज ऑर्डर फ्रॉम Amazon, Flipkart, व्हाटएवर वेबसाइट दैट यू यूज. एंड कोई एक स्पेसिफिक पब्लिशर नहीं है. वैसे तो LexisNexis इज द यूनिवर्सल or LexisNexis, these are the two biggest publications in India for the law books, so you may refer them. But PM बख्शी भी मिलता है, ये भी मिलता है, बहुत सारा कुछ मिलता है, आप कुछ भी ले लीजिएगा. और ये ऐसा होता है कई बार क्लास के बाद, और ये अक्सर होता है मेरे बोलने के बाद भी होगा और होता है कि लोग आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल लिखा हुआ है ना. 4-5 क्लासेस के बाद जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो लोगों को लगता है कुछ इसकी किताब में स्पेशल लिखा होगा, तभी ये आदमी इतना सब कुछ बता पा रहा है जो इसमें नहीं लिखा है. वो इसलिए मैं बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट के साथ तकरीबन 10 साल स्पेंड किए हैं. आई स्पेंड 10 years विद दिस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग माई एजुकेशन इन लॉ. राइट, सो दैट इज व्हाई आई एम एबल टू टेल यू दैट.
मेरे को तो बहुत सारे इसके आर्टिकल्स मुंह जबानी भी याद हैं, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि प्लीज क्लास के बाद आके मुझे ये मत बोलिएगा कि सर एक बार जरा दिखा दीजिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा वाला तो ऑरेंज कलर का मिला है, आपका येलो कलर का है, सर ये छोटी किताब मिली है, मोटी किताब मिली है. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है ना. इट इज नॉट गोइंग टू वेरी फ्रॉम द वन पब्लिशर टू द अदर. ओनली थिंग विच वेरीज इज कई बार इसके अंदर कमेंट्री होती है. माय सजेशन विल बी कि आप वो कमेंट्री के बिना लीजिएगा, उसको बोलिएगा सर मेरे को बेयर एक्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उसमें, केवल और केवल प्रोविजंस होने चाहिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के, नथिंग एल्स. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स एट ऑल, एब्सोल्युटली राइट. तो मेरे ख्याल से ये इस पे ये प्राइस 200 का लिखा है, जो भी का मिलता होगा ये मार्केट के अंदर. सो यू मे बाय इट, बट प्लीज एंश्योर दैट यू कैरी दिस विद योरसेल्फ for every class. The reason for that is because I will be referring to provisions of the constitution directly from the bare act. अगर आपने constitution को ही हाथ में नहीं लिया और पढ़ा नहीं यहां से provisions, तो आप कभी नहीं समझेंगे कि इस text की value क्या है. You will never be able to understand and appreciate what we are going to be delivering to you in the class. So please do ensure that you get this. And this is not any kind of a sales promotion, or this is not any kind of a promotion for any publication or any book. This is the Constitution of India that you need to be buying, है ना. तो ये खरीद लीजिएगा प्लीज आप before you turn up for the next class, right. कई बार लोग यहाँ पे जो है मिली जुली सरकार चला रहे होते हैं, right. 3-4 लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ जाते हैं. अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो मेरे पास आके बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा अपनी तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर वो नहीं है तो प्लीज इसको कृपया करके खरीद लीजिएगा, राइट. अदरवाइज एक और दूसरा सोर्स तरीका भी है. I have given this particular link, or otherwise you people are very tech savvy, you just go to the Google, search Constitution of India PDF and download it from whatever websites or sources that you get. You will get a number of websites of the Indian government only, Department of Justice वगैरह की वेबसाइट मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप अपने लैपटॉप, टैबलेट, जो भी whatever you are using, you may, और फोन, you may keep it there as well. But I would still recommend कि आप इसकी फिजिकल कॉपी रखिएगा. उसका रीजन ये है दैट यू विल बी एबल टू मार्क, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग ऑन द साइड एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. प्लीज डू गेट होल्ड ऑफ दिस बिफोर यू टर्न अप फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना. मतलब यू हैव स्कोप फॉर 1 or 2 क्लासेस, बट चौथी क्लास ऑनवर्ड्स अगर आप इसके बिना आएंगे तो आप चीजें नहीं समझ पाएंगे. दैट आई कैन टेल यू, है ना. सो प्लीज, एंड प्लीज डोंट डू द शेयरिंग इन द केयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग. यू कैन डू इट विद अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ. प्लीज डोंट गेट इट इनटू माय क्लास फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स ऑल माय रिक्वेस्ट, है ना. उससे ज्यादा और मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं किसी चीज के लिए. देन apart from that, you may refer Indian Polity by M. Lakshmikant. There are a few other books as well. Okay, I mean, I'll tell it to you at the outset only. I'm not a big fan of this particular book. Okay, and I'll tell you the reasons for that. And when you will attend my classes, you will realize that Constitution and Polity is much more than Lakshmikant and many more other things. And yes, this is a well-written book in terms of giving you an insight into the basic idea of the constitution, but nothing more than that. Analytically, this will not help you in solving any questions in the mains. This will not help you in solving some of the analytical questions in the prelims as well. I am not saying that this book is useless. It is of course very good in terms of getting to understand the constitution in a very basic manner. But at the same time, once you attend my classes, I give it to you in writing that you wouldn't need to refer Lakshmikant as such, except for a few topics here and there, which I will myself tell you कि ये जो है मैं नई क्लास में करवा रहा हूँ, या ये टॉपिक जो है बहुत फैक्चुअल है, ये कुछ चीजें जो है आप बुक से पढ़ लीजिएगा. सो यू मे रेफर Lakshmikant for that. The other book that you may be wanting to refer is DD Basu, but ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स के लिए. DD Basu, The Introduction to the Indian Constitution. So I would suggest that unless you have a background in law or political science, don't refer it right now. Maybe अगर आप second, third attempt तक जाते हैं, after attending my classes, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, but अभी मत कीजिएगा. First attempt में there is no requirement. Some students also refer Subhash Kashyap. I mean, again, this book has also been written in a very lucid and a simple manner. So I would say that this, or there is one more book on the introduction of the Indian Constitution,
which is written by Brij Kishore Sharma. That also is a well written book. In fact, I would say that among these three books, D.D. Basu of course is brilliant. It's the best book to understand the constitution, but not for you is what I would suggest. So M. Lakshmikant, Subhash Kashyap and Brij Kishore mein, I personally recommend this book the most, because this in my opinion has been written the best. है ना, ये उस आदमी ने लिखी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, राइट. सो एंड ऑफ कोर्स सुभाष कश्यप ऑल्सो, आई एम नॉट contesting that. I am not very sure about Lakshmikant on that terms, and I'll be very honest about it. But again, it's your choice. You may choose whatever you may want to accordingly. Then the other thing is Vision IAS reading material which has been given to you. We are still in the process of revising that. So हो सकता है by the time you people are preparing, you are appearing in your classes are going on, you may get access to the new material as well. But anyway, जो पुराना material भी आपको जो मिला है या जो मिलेगा, whatever it is, that also has been prepared with a lot of effort, with a lot of supervision. So I can tell you that that is pretty much up to the mark. Plus the good part about that material is that after every topic, you have been provided with previous year prelims questions, previous year mains questions. You have been provided with the previous year test series questions solved from the Vision IAS mains test series. So after every topic, you know how to evaluate on what to evaluate yourself on, whether you have studied that topic properly or not. तो उसके लिए आप ये रेफर कर सकते हैं, right? Plus apart from that, I will be providing you class handouts also, especially towards the later classes. मैं कुछ handouts दूंगा. You may refer them. Apart from that, ये जो PPT वगैरह होंगी, इन पे भी there will be some text etc. So you may refer that as well. Okay, so these are the things about the sources. I'll just stop here for 2 minutes and take any questions related to what we have discussed till now. Please put up your hands and then ask. Sources से related किसी को कोई question हो या generally और अभी तक जो हमने बात करी है उससे related. हाँ जी सर बताइए. Political theory book. Okay, so the political theory book which is there, that is also a very good book, है ना. I don't recommend reading that at this point of time, political theory वाला, because आप थोड़ा सा just get introduced to the constitution a bit, 15-20 classes कर लीजिएगा, and then after that you may refer the political theory book as well. That has been written well, क्योंकि वो थोड़ा सा political science के perspective से लिखा है. It may seem intimidating for some of these students at the beginning. So I don't necessarily recommend reading that book at the beginning itself, but you should definitely refer the political theory book as well, because उसमें कुछ basic concepts दिए हुए हैं political science perspective से, which will help you in solving the questions in the mains and the prelims exam. Yes.